I ask you, before few decades, अगर मैं 90s में होता, अगर मैं 80s में होता, 1980s, 1990s, if I ask somebody, if I asked anybody to imagine a cell, अगर मैं किसी से पूछता to imagine a cell, जैसे मैंने कहा सेल है, everybody would imagine, मैंने कहा membranes है हमारी, these are the membranes that we have, this is a cell that we have. If I ask somebody to imagine a cell, how you would imagine a cell? You would imagine the interior of a cell like gel-like, Any student would imagine. अभी भी शायद अगर मैं आपसे कहूं कि imagine the interior of a cell, कि अंदर से सेल कैसा होगा, you would imagine something like aqueous gel-like structure. यहाँ पे न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा ER पड़ा हुआ है, this is the endoplasmic reticulum, ये हमारा Golgi bodies हैं यहाँ पे, this is the Golgi bodies that we have. ठीक है, these are the vesicles which are budding off, this is the mitochondria that we have. So anybody would imagine the interior of a cell like gel, gel-like structure in which different components are present, in with different organelles, different compartments are present. This is how we imagine. But now we know the interior of a cell, in fact, is much more structured. मैं क्या कह रहा हूं, ये जो सेल का इंटीरियर है, the interior of a cell is highly structured, This is highly structured. It's not simply gel-like structure. It is highly structured, And we know different components, जैसे मैंने कहा न्यूक्लियस है, ER है, Golgi bodies है, माइटोकॉन्ड्रिया है, different components, different organelles, they have nearly fixed position. इनकी जो position है, their position is nearly fixed inside the cell. ऐसा नहीं है कि आज न्यूक्लियस यहाँ है तो कल आप यहाँ इमेजिन करने लग जाओ, परसों कह दो सर न्यूक्लियस यहाँ पे है. No, different components, different compartments, different organelles, they have nearly fixed position inside the cell. Is this very clear? And we know part of this interior structure, मैंने कहा ना, cell interior is highly structured. We know part of the structure is provided by cytoskeleton. So cell का जो interior है, we know it is highly structured, and part of the structure is provided by something called a cytoskeleton. Cytoskeleton. So cytoskeleton is very important. We know ये जो cytoskeleton है, this will determine the shape of the cell. मैंने कहा cytoskeleton. ये क्या काम है cytoskeleton का? Cytoskeleton, we know it determines the shape of the cell. अगर मैंने कहा RBC is biconcave है, we know RBC is biconcave. So who determines the shape of the RBC? We know it is the cytoskeleton. So they determine the shape of the cell. They are responsible for the entire architecture of the cell. They are responsible for the architecture of the cell. So they provide the architectural framework to the cell. They provide architectural framework to the cell, shape to the cell. They provide support to the membrane. They actually provide the support to the plasma membrane. Is this very clear? We know cytoskeleton is responsible for locomotion. When I say locomotion, मतलब cell movement. It is responsible for cell movement. ठीक है? When I talk about cell movement, अगर मैं cell movement की बात करता हूं, if I talk about the cell movement, we know cells which have cilia and flagella, जैसे मैंने कहा पैरामीशियम है, या मैंने कहा cells which have cilia, कुछ bacteria हैं which have flagella. We know sperm has flagella. So cells which have either cilia, cells which have flagella, we know they show motility, they show locomotion. They can locomote, they show motility, but even the cells which do not have cilia and flagella, ऐसा नहीं है कि only cells which have cilia and flagella can move. We have cells which do not have cilia and flagella. For example, we have macrophages. We have a macrophage. We have neutrophils. ठीक है? We have fibroblast cell. We have fibroblast cells. We know all these cells show movement. All these cells can move, but they don't have cilia and flagella. तो जरूरी थोड़ी है कि for cell movement we would always require cilia and flagella. We have cells which do not have cilia and flagella, but still they show locomotion, still they can move. So who's responsible for this? मैंने कहा amoeba. Amoeba does not have cilia and flagella. It shows locomotion. So look at different examples where the cells show motility, but they don't have cilia and flagella. So who's responsible for this? And we know जो cilia and flagella है, अगर मैं cilia और flagella की बात करूं, cilia and flagella, they are made up of what? They are made up of microtubules. Microtubules. तो अब जिन cells में cilia flagella नहीं है, उनमें who's responsible? We know it is the actin filaments. Actin filaments.
actin filaments are responsible for locomotion, and we can call them as microfilaments also. Either we call them as actin filaments, or I can call them as microfilaments. Microfilaments. And what is a microfilament? Microfilament, actin filaments are part of cytoskeleton. What is a microtubule? Microtubule is a part of cytoskeleton. दोनों cytoskeleton की तो part है ये. And that is why I'm saying कि one of the functions of cytoskeleton is locomotion. चाहे वो actin filament हो, चाहे वो microtubules हो, they are all involved in locomotion. भाई हमारी movement हो रही है. I can move, my legs can move, my hands can move. Why? Because I have muscles. I have muscles. And muscles are made up of what? Muscles are also made up of actin filaments. हमें पता है actin, myosin, तो muscles में भी तो actin filaments ही होते हैं. Muscles have bundles of actin filaments. Muscles may be bundles of actin filaments. तो locomotion के लिए चाहे हमारी locomotion हो, चाहे किसी की locomotion हो, actin filaments would be involved. So one of the functions of cytoskeleton is shape, architectural framework, support to the plasma membrane, locomotion. See some other functions. और क्या functions है cytoskeleton के? Some other functions of cytoskeleton हमें पता है, they are involved in cell division. Cell division. भाई cell division में क्या होता है? Cell division में spindle fibers. We have spindle fibers which are involved in cell division. We know spindle fibers. ठीक है, and we know spindle fibers are made up of what? बताओ मुझे. Spindle fibers जो है वो किसके बने हुए हैं? We know spindle fibers are made up of what? Microtubules. Spindle fibers are made up of microtubules. So ultimately what? मतलब one of the functions of cytoskeleton is they are involved in what is cell division. देख रहे हो? They are involved in the positioning of different organelles. Position of different organelles. So see some brief functions, they're also involved in cell signaling. They're also involved in cell-cell interaction. हमने देखा ना cell junctions, जो cell-cell junctions होते हैं, तो junctions कहाँ पे होते हैं? कहाँ है भाई junctions? हमें पता है, that is, we have cell-cell addition. One cell interacts with the other through these junctions, So again, who is involved? Again, cytoskeleton. So cytoskeleton is very important. Cytoskeleton, अब हमें समझ में आ रहा है भाई, cytoskeleton जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर cytoskeleton नहीं होगा, various functions cannot be performed by the cell. ना cell division होगी, ना हमारी movement होगी, ना locomotion होगी, ना cell का shape determine होगा. ठीक है? Even, formation of nuclear membrane. अगर मैं nuclear membrane की बात करता हूं, we talk about nuclear membrane. हमें पता है जब भी cell division होती है, whenever the cell division takes place, during the cell division, when we talk about the late prophase, in the late prophase, the nuclear membrane disintegrates. We know nuclear membrane, this breaks down. Why? Why does the nuclear membrane break down? Why? Who is involved in the breakdown of the nuclear membrane? It is again, who is involved? Cytoskeleton. Cytoskeleton is involved. तो भैया जहां की भी बात करो, cytoskeleton will come into picture. Am I clear? तो हम बात कर रहे हैं cytoskeleton की. We are talking about the cytoskeleton. Cytoskeleton. अब when we talk about cells, we have eukaryotic cells, we have prokaryotic cells. So eukaryotic cells have cytoskeleton. So does a prokaryotic cell have cytoskeleton? Does a prokaryotic cell also have a cytoskeleton? Yes. They have cytoskeleton, but it differs from the eukaryotic cytoskeleton. It differs from that of eukaryotes. Am I clear? So both have cytoskeleton. चाहे हम prokaryotes की बात करें, चाहे eukaryotes की बात करें. So let us see, we have talked so much about cytoskeleton. Let us see what is a cytoskeleton. What is a cytoskeleton? How do we define the cytoskeleton? So we know cytoskeleton is nothing else. It is a complex network. What is cytoskeleton? We know it is a network. Simple.
It is a network of interconnected. It is a network of interconnected filaments, filamentous and tubular structures. Tubular structures. देखो, nothing else. It is a network of interconnected filamentous as well as tubular structures, which extends throughout the cytoplasm, which extends throughout the cytosol, Khatam. This is what is cytoskeleton. Nothing else. It is a network of what? Network of, मैंने क्या बताया? Network of interconnected filaments as well as tubular structures, which extends throughout the cytosol. मतलब कहने का ये, when I say it extends throughout the cytosol, मतलब क्या? मतलब from nuclear membrane to inner plasma membrane, from nuclear membrane to inner plasma membrane. This is what is cytoskeleton that we have. So this is very clear now. What is cytoskeleton? So there are two things in cytoskeleton. Either we have filamentous structures or we have tubular structures. या तो filamentous हैं या tubular हैं. So let us see. हम बात कर रहे हैं eukaryotic cytoskeleton. You were talking about eukaryotic cytoskeleton. So when we talk about the eukaryotic cytoskeleton, we know the entire eukaryotic cytoskeleton is made up of three components. तीन चीजें हैं इसमें. पूरे साइटोस्केलेटन में जो पूरा नेटवर्क है, the entire network is made up of three components. You know it. आपको पता है. The first is the actin filaments. ठीक है. Actin filaments we can call them as, क्या कह सकते हैं और? Microfilaments. और actin filaments. ये पहला component हो गया. दूसरा component क्या है हमारा? Microtubules. They are the tubular structures. ये tube like है हमारे, जैसे पाइप होता है, पाइप like structures और tube like structures. Actin filaments मतलब filamentous structures, ये filament है हमारे. And the third component that we have, is the intermediate filament. ये भी filamentous structures हैं हमारे. Intermediate filaments. So three components are part of cytoskeleton. Actin filaments or microfilaments, intermediate filaments, microtubules. Now out of these, ये जो actin filaments हैं जो हमारे muscles में होते हैं, muscles में, is this clear? ये जो actin filaments हैं, we know actin filaments are the smallest of the cytoskeletal elements. They are the smallest. And microtubules are the largest of the cytoskeletal elements. ये smallest है, largest है. जो एक्टिन फिलामेंट्स है, इनका जो डायामीटर है, मैंने कहा इसका जो डायामीटर एक्टिन फिलामेंट का, दैट इज 7 नैनोमीटर्स. और जो माइक्रोट्यूब्यूल का डायामीटर है, आउटर डायामीटर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल इज 25 नैनोमीटर. अब इनके बीच में जो होगा, दैट इज इंटरमीडिएट फिलामेंट. तो इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो डायामीटर है, इट इज नॉर्मली 12 nanometers, but it is variable from 8 to 12 nanometers. It normally varies from 8 to 12 nanometers. So it falls between what? We know it falls between actin filament and microtubules. And that is why we call them as intermediate filaments. Very, very important. ठीक है? तो आपने याद रखना है ये. और जो intermediate filaments हैं, we know they are never involved in locomotion. Actin filaments are involved in locomotion. Microtubules are involved in locomotion. But intermediate filaments are never involved in locomotion. Never involved in locomotion. Their primary function is to provide mechanical support. इनका main function क्या है? Intermediate filaments का जो main function है, their main function is to provide mechanical support to the tissue. Support, mechanical support to the tissue. जैसे example keratins. What is keratin? हमारे स्किन में होता है, हमारे बालों में होता है, हमारे नेल्स में we have keratins. Keratins provide structural support, structural mechanical support. So this is the main function, to provide support. So now we know different components of the eukaryotic cytoskeleton. और दूसरी तरफ अगर हम prokaryotic cytoskeleton की बात करें,
We talk about the prokaryotic cytoskeleton. Again, prokaryotic cytoskeleton is also made up of 3 components. यहाँ पे भी 3 components हैं, but different from eukaryotic. तो prokaryotes में what do we have? We have FTSZ, we have MREB, ये हमारा MREB, और तीसरा क्या है? क्रिसेंटिन, 3 components हैं, ठीक है. जो FTSZ है, what we say कि they are very similar to tubulins, they are very similar to microtubules, so they are found to be similar to microtubules. They are not microtubules, but they are very similar to microtubules. जो MREB हैं, they are said to be similar to the actin filaments, और जो क्रिसेंटिन है, this is said to be similar to intermediate filaments, but they are different components. So always keep in mind, cytoskeletal elements in eukaryotes will differ from that of prokaryotes. ठीक है. So we are talking about the cytoskeleton. And now we know कि the first one that we have to start. सबसे पहले हम कौन सा start करेंगे? We will start with the first one, which is the smallest. And what is the smallest? Tell me. Which is the smallest one? Actin filament. Let us start with the microfilaments or the actin filaments. Let us start with the microfilaments or the actin filaments. बताने को बहुत कुछ है इसके बारे में, ठीक है. We can have multiple lectures only on microfilaments, but whatever is needed would be provided to you. ठीक है, डिटेल में करेंगे थोड़ा सा. Now, when I talk about the microfilaments, सबसे पहले तो हमें पता है कि smallest of the cytoskeletal elements, size is 7 nanometers. Let us see some functions. Why should we study microfilaments? What are the functions of microfilaments? The first important function is we know their role in muscle contraction. Very important. ठीक है. दूसरा function है they are involved in locomotion. See, many cells which can migrate, जैसे मैंने कहा मैक्रोफाजेस हैं, हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, तो cells which can migrate, they have structures called as lamellopodia or philopodia. आपने नाम सुना होगा philopodia. We have lamellipodia. So cells which are migrating in nature, which are migratory, they have structures called as philopodia, lamellopodia. What are they made up of? They are nothing else. Philopodia, lamellopodia, it is made up of actin filaments, microfilaments. This is it. We know certain cells show cytoplasmic streaming. Now, who's responsible for cytoplasmic streaming? Again, it is the actin filaments which are responsible for the cytoplasmic streaming also. So very important. हमने देखा है जब सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन में, during the cell division, we know karyokinesis is followed by cytokinesis. Karyokinesis is followed by cytokinesis. ठीक है, मतलब अगर मैंने कहा सेल है तो फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन विल टेक प्लेस एंड देन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन. तो न्यूक्लियर डिवीजन इज karyokinesis followed by the cytosolic division, which is cytokinesis. So we know during the cytokinesis there's a cleavage furrow which is formed. ये देखो, a furrow starts forming and then this furrow deepens and then we'll have two daughter cells. So furrow deepens and then the entire cell is divided into two. Now who's responsible for the formation of this cytoplasmic furrow? ये जो furrow है हमारा, this cleavage furrow. So this is cleavage furrow. ये हमारा जो cleavage furrow है, who's responsible? We know it is the actin filaments. Actin filaments are involved in formation of these cleavage furrows that will divide the animal cells during cytokinesis. Am I clear? So this is very, very important. Actin filaments have a very important role. अगर हम animal, let us see another function. Look at the animal cell. मैंने कहा एक animal cell है यहाँ पे, ये हमारा nucleus पड़ा हुआ है. We know below the plasma membrane, if I say this is the plasma membrane, we know below the plasma membrane we have entire network of actin filaments. तो plasma membrane के नीचे जो है, we have this entire network of actin filaments which is present. Look at this. This is the network.
network of actin filaments below the plasma membrane. And we call this network as what? We call this network as the cortical network. This is the cortical network present below the plasma membrane. किसका बना है भाई cortical network? We know cortical network is primarily made up of actin filaments plus some other proteins. तो यहाँ भी actin filaments है. और आपको पता है ये जो cortical network है, one of the functions of this cortical network, the function of this cortical network is to provide support to the plasma membrane. It provides support to plasma membrane. This is responsible for the shape of the cell. Shape of cell. अगर मैंने कहा RBC is biconcave, why RBC is biconcave? Who's responsible? Tell me. It is the cortical skeleton. ये जो हमारा cortical network. This is what is responsible for the shape of the RBC. So ultimately, जो actin filaments हैं, they perform very important functions in the cell. अगर मैंने कहा epithelial cells हैं, we know epithelial cells have microvillus towards one end. जो epithelial cells हैं, they have the microvillus. This is epithelial cell. They have microvillus. For example, epithelial cells which line the intestines. To increase the surface area of absorption, they have the microvillus, increases the area for absorption. And we know ये जो microvillus है, inside the microvillus, it is supported. Who will support the finger-like extensions? We know these finger-like extensions of microvillus, they are supported by the bundles of actin filaments. We have the bundles also. These are the bundles of actin filaments. हमारे muscles जो होते हैं, muscles में भी we have bundles of actin filaments. We call them as the loose bundles of actin filaments. और जो microvillus में bundle हैं, they are the tight bundles. हमारे muscles में जो bundles हैं actin filaments के, they are loose bundles. So very, very important to study microfilaments. ठीक है? तो now we know we are studying about the actin filaments. हम बात कर रहे हैं actin filaments की. The name itself is very clear. ये जो actin filaments हैं, we know they are made up of which proteins? Which proteins? Which proteins will make actin filaments? We know it is the actin proteins. So what is the building block? What is the building block of actin filament? The building block of actin filament is the actin proteins. This is the actin protein. Is this very clear? They are the building blocks of the microfilaments. और आपको पता है, अगर हम मसल सेल की बात करें, we talk about the muscle cell. Muscle cell में the amount of actin protein is approximately 20%. So actin protein is 20% of the entire protein is 20% of the entire protein is actin in the muscle cells. और बाकी non-muscle cells में, in the non-muscle cells, the amount of this actin varies from 5 to 10%. 5 to 10%. बात समझ में आ गई? तो हम बात कर रहे हैं actin proteins की. We are talking about what? We are talking about the actin protein which makes up the microfilaments, which makes up the actin filaments. Excuse me, sir. हाँ जी बोलिए. सर एक बार प्रीवियस स्लाइड दिखा दीजिए. ये लो भाई. मसल्स में 20% है, नॉन मसल सेल्स में 5 से 10%. ठीक है? Now, when we talk about actin protein, ये जो actin protein है, this is synthesized on cytosolic ribosome. भाई राइबोसोम में synthesis होगा. This is synthesized on the cytosolic ribosomes. ये हमारा mRNA पड़ा हुआ है. ठीक है, ये हमारे राइबोसोम्स हैं. ये हमारे राइबोसोम्स हैं यहाँ पे. ये mRNA मॉलिक्यूल, ये पॉलीपेप्टाइड बन रहा है. This is what is the polypeptide, N-terminus of the polypeptide. फिर ये पॉलीपेप्टाइड रिलीज हो गई. This polypeptide is completed, released, N-terminus, C-terminus, and now this polypeptide folds. This polypeptide will fold. ये देखो polypeptide folds. किसकी polypeptide? Actin वाली polypeptide है ये. This polypeptide folds into a roughly U-shaped structure.
This will fold to form roughly a U-shaped structure. ये देखो. And this is the actin protein. ये हमारा actin protein है भैया जो हमारी muscles बना रहा है. This is the actin protein, roughly U-shaped. This is globular structure. This is globular. So this protein is globular, roughly U-shaped. Is this very clear? And you know what is the length of this polypeptide which forms actin? How many amino acids are present in this actin protein? How many amino acids? 375 amino acids are present over here. So actin polypeptide is made up of 375 amino acids. Molecular weight 43 kilodaltons. इतनी जरूरत नहीं है आपको. You don't need. कोई नहीं पूछ रहा आपसे सब. Just remember, it is a globular protein, roughly U-shaped. And in the center, you will see there's a cavity. ये हमारी देखो cavity है. यहाँ पे देखो cavity. In the center, you have a cavity. Center में एक space है, cavity है. Now, why this cavity is important? Why this cavity is important? ये जो cavity है, this cavity is important over here because this cavity has a ATP binding site. We have this ATP binding site. मतलब हमारे जो actin proteins हैं, these actin proteins can also bind to ATP and they can hydrolyze this ATP into ADP. They can bind to ATP in the cavity and they can hydrolyze this to ADP. So actin proteins are very important. क्या shape है इसका? Globular shape है. The actin protein has a globular shape and that is why sometimes ये जो actin proteins हैं, single actin protein, I'm talking about a single actin protein which is globular in shape, this is also called as G-actin. Globular actin, तो हम क्या कहते हैं? G-actin. तो मतलब it is a monomer, single protein. Monomer. तो single protein which is a monomer, we call it G-actin. Am I clear? ठीक है. और ये जो G-actin है, मैंने कहा ये जो हमारा G-actin है, ये रहा हमारा रफली, ये जो हमारा G-actin है, it can also interact with two other actin subunits. This will interact with two other actin subunits, one on the lower side, one on the upper side. बात समझ में आ गई? तो each actin subunit has binding sites for two other actin monomers. मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि each actin subunit has binding sites. It has binding sites for what? For two other G-actins, for two more G-actins. Is this very clear? That means two more will come, interact with this, and polymerization starts. Polymerization starts. Interaction. Polymerize. They start polymerizing. फिर और आएगा, एक और आ जाएगा ऊपर, एक नीचे आ जाएगा फिर और. They start polymerizing to form what? To form a filamentous structure. They will polymerize to form a filamentous structure. तो हम एक्टिन के फिलामेंट्स की तो बात कर रहे हैं. एक्टिन क्या होते हैं? What is a microfilament? I'm saying filamentous structure. So this is a filamentous structure. So single protein is G-actin, and single proteins G-actins will polymerize to form filamentous structures. And this is what is actin filament. This is what is actin filament. Sometimes we call it what? We can call it F-actin. तो याद रखना है आपने. One is G-actin, one is F-actin. G-actin is the single monomer, single protein subunit, whereas F-actin, when it polymerizes to form a filament, this filament is called as what is? F-actin. Am I clear with this? Yes, sir. ठीक है. तो मुझे एक चीज बताओ, ये जो फिलामेंट दिख रहा है आपको, डू यू थिंक बोथ द एंड्स ऑफ फिलामेंट्स आर सेम? यहाँ पे तो कैविटी दिख रही है मुझे, और यहाँ पे तो कैविटी नहीं है लोअर एंड पे. अपर एंड पे कैविटी है, लोअर एंड पे नहीं है. तो डू यू थिंक द टू एंड्स ऑफ द एक्टिन फिलामेंट्स आर सेम? क्या ये वाला जो एंड है और ये वाला जो एंड है नीचे वाला, डू यू थिंक बोथ द एंड्स आर सेम? No, sir. दैट मींस जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, बिकॉज द टू एंड्स आर नॉट सेम,
and all the subunits are arranged in the same direction. सबका जो कैविटी है ऊपर की तरफ है, सबकी कैविटी ऊपर की तरफ है, देख रहे हो आप? दैट मींस ऑल दी G actins, they are arranged in the same direction, and that is why जो actin filaments हैं, they are polar in nature. We know they are polar in nature. The two ends are different. They are polar structures. Am I clear with this? भाई इतनी बात समझ में आ गई कि जो actin filaments हैं, they are polar, and this polarity is very important. We know this polarity of actin filament is very important. क्यों भाई? Why this polarity is important? क्योंकि polarity is important to guide the movement of other proteins. For example, myosin. How does the myosin know in which direction I have to move? So polarity is very important for the movement of other proteins such as myosin. Am I clear? बात समझ में आ गई? My friends and countrymen. Yes, sir. So polarity of actin filament is important to guide the movement of other proteins such as myosin. Is this clear? And we know that two ends are different. One is a negative end, one is a positive end. याद रखो. So we have two ends of microfilament. One we call as negative end, one we call as positive end. Negative end sometimes is also called as pointed end. This is also called as pointed end. So pointed end is the negative end, and the positive end, sometimes we call it barbed end, barbed, B-R-B-E-D. This is called as the barbed end. So we have the pointed end, we have the barbed end. Two different ends. Polarity, it is a polar structure. Is this clear? ठीक है? अब देखो. When I'm talking about actin Excuse me, sir. yeah. The pointed end is the negative one. देखो क्या लिखा है यहाँ पे, pointed end में negative ही बना रखा है ना मैंने. Yes, sir. Okay. यहाँ देखो screen पे. ठीक है? So now this is Yes, very sir, clear. thank you. Now the question is, अब देखो हमें पता है ये linear structure है. This filamentous structure, it is a linear structure. But if you touch some Indian authors, अगर आप कुछ Indian authors की किताबें देखोगे अगर, if you touch some Indian authors cell bio book, तो what they have mentioned कि ये जो actin filaments हैं, they are double stranded. Indian authors say कि actin filaments are double stranded. They are double stranded helical structures. They are but double stranded helical structures. Indian authors ने ऐसे लिखा हुआ, लेकिन जो हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो हमारी सेल बायो की फॉरेन ऑथर स्टैंडर्ड बुक्स हैं, वहां पे दे डोंट मेंशन डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, और कुछ इंडियन ऑथर्स ने लिखा हुआ डबल स्ट्रैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर. तो क्या ये सही है? इफ आई से actin filaments are double stranded helical structures, this is precisely wrong. This is wrong. Why do they mention this as helical structure? क्या आपको हेलिकल लग रहा है कहीं से? Do you think this is helical? But there's a reason behind this. If somebody says कि actin filaments are helical structures, we know there's a reason behind this. So what is the reason? Why somebody says कि it is a helical structure? We know, अब देखो, during the assembly of the F actin, ये F actin ही तो है. So during the assembly of this F actin, when G actins will come, तो जब F actin की assembly होगी, जब filamentous की assembly होगी filament की, तो G actin monomers come. But we know during the assembly process, each G actin, ये देखो, we know during the assembly process, each G actin, this is tilted, this is rotated by an angle of 166 degrees. So each G actin which comes, which polymerizes, it is rotated by an angle of how much? 166 degree. 166 degree rotation during assembly, during the assembly process. तो क्या लग रहा है अब आपको? Look at this. So doesn't it look like double stranded structure? अगर आप इसको दूर से देखोगे, we know it nearly appears as a
a double stranded structure, because each subunit during its assembly is rotated by 166 degrees. एक strand हमारा ये हो गया, एक strand हमारा ये हो गया. So it appears as double stranded, but actually it is not a double stranded structure. It gives a pseudo appearance, it gives a pseudo appearance of a double strand. It's actually not a double strand. Am I clear with this? And they have a distinct polarity. This is the negative end. This is the positive end. Each subunit assembles in the same direction. सबकी ये जो cavity है ऊपर की तरफ ही है. So these filaments have distinct polarity. Am I clear with this? ठीक है. अब आपने याद रखना है, what you remember, ये जो actin filaments है, these actin filaments, we know the entire dynamics. ये dynamic structures हैं, ये static structures नहीं है. These are dynamic structures, you know. ठीक है. And we know the entire assembly, the entire disassembly, the entire dynamics of these actin filaments, it is controlled by, इनकी पूरी जो dynamics है, this is actually controlled by a different set of proteins. कहाँ पे actin filament का polymerization होना है, कहाँ पे इनको टूटना है, कहाँ पे इनको बनना है, इनकी stability कौन करेगा, how they will become stable. So their entire dynamics is controlled by a different set of proteins, and we call them as actin binding proteins. Actin binding proteins. तो हमारे सेल में जो actin binding proteins होते हैं, they are the ones which will control the assembly, disassembly, dynamic stability of these actin filaments. Am I clear? इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. ठीक है. So let us move further now. So now we know something about the actin filaments. To make things more complicated, और इसको complicate करें अगर हम, to make it more complicated, we know based on the sequence similarity, मैं क्या कह रहा हूँ, based on amino acid sequence similarity, based on the amino acid sequence similarity, we know ये जो actins हैं, they can be divided into two groups. ठीक है. तो जो actin proteins हैं और जो actin filaments हैं, they can be actually divided into two groups. देखो, one is the muscle specific actins. We have the muscle specific actins, and the second is the non-muscle actins. Non-muscle actins. So two groups of actins we have: muscle specific, non-muscle. ठीक है. तो अगर हम muscle specific actins की बात करें तो इसका एग्जांपल है we have alpha actins. अल्फा एक्टिन्स. अगर हम नॉन मसल एक्टिन्स की बात करें, इसके एग्जांपल्स हैं वी हैव बीटा एक्टिन, वी हैव गामा एक्टिन. तो मतलब बोलते तो हम एक्टिन है, एक्टिन प्रोटीन, बट एक्टिन प्रोटीन्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. इन डिफरेंट टिश्यूज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिन फिलामेंट्स, फ्रॉम अल्फा एक्टिन्स टू बीटा एक्टिन्स टू गामा एक्टिन्स. एम आई क्लियर? तो जो नॉन मसल एक्टिन्स हैं, जैसे मैंने कहा बीटा एक्टिन है, गामा एक्टिन है, we know, do you think they are present in different cells? Beta actin would be present in different cell, alpha actin would be present in different cell. No, alpha and beta actins are present in the same cell itself. Alpha and beta actins, they are found in the same cell, but at different regions. They're present at different locations, different regions in the same cell. तो दोनों एक ही सेल में पड़े हुए हैं ये. Example, if you talk about the epithelial cell, if I talk about the epithelial cell, we know it there's a microvillus. ये हमारी epithelial cell है. We know this epithelial cell has a microvillus. This is the apical end. Apical end has microvillus. और जो basal end है, we know basal end is attached to the ECM, which is the connective tissue here. This is the ECM, extracellular matrix. So these are the two ends, apical and basal. Now what we see, ये जो beta actin है,
this beta actin is present towards the apical end in the same cell. और जो हमारा gamma actin है, gamma actin is present towards the basal end in the same cell. So they are both found in the same cell, but at different regions, at different regions. Okay. So this concept should be very, very clear. तो अब तक हमने जो पढ़ा है, have you understood this? What we have studied till now? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. So we have talked about actin. Is this clear? So, हाँ जी बोलो. so what did you say? Alpha and beta actin are present in the same cell or beta and gamma? Beta और gamma, beta and gamma present in the same cell. ठीक है. Okay, तो sir. बीटा है और यहाँ पे गामा है. ये देखो बीटा एंड गामा. Okay, sir. जो अल्फा एक्टिन है वो तो मसल सेल्स में है. Is this clear? We are talking about the non-muscle cells, and non-muscle cells will have both in the same cell, but at different regions. They'll not combine with each other. Now, we have been talking about the actin filaments. We know the structure of actin filaments. They are pseudo double helix. It is a pseudo double helix. Each subunit is rotated by 166 degrees. We know some information we have about the actin proteins. We have seen they are globular. In the center, we have a cavity which binds ATP. So we have been talking about the actins, We have talked about a lot of functions of actins. Now the question is, let us see about the assembly of this actin filament, about the polymerization. थोड़ा सा हम देखते हैं polymerization or the assembly of F actin. मतलब actin filament, we can call it F actin, मतलब actin filament. पूरा लिखने से अच्छा है कि F actin मतलब filamentous actin. Okay. So let us look at the polymerization. We have the, okay. Now the question is, we know the first step during the polymerization reaction, this is called as nucleation. तो पहला स्टेप क्या है सबसे? पहला स्टेप जो हम कहते हैं, it is called as nucleation. And during nucleation, at least 3 actin monomers will come, at least 3 G actins will come. तो मैं क्या कह रहा हूं? During this nucleation reaction, at least 3 G actin molecules, 3 G actin proteins have to come and they have to interact. They have to form a small aggregate. They will interact to form a small aggregate. Small aggregate. Is this clear? So this is the nucleation reaction. And once this aggregate is formed, ये देखो, once this aggregate is formed, मैं पूरा U shape नहीं बना रहा हूं. This is negative end, this is positive end. So once the aggregate has been formed, now this structure, this aggregate can further grow. Now this further elongates, this further grows. Now you have to tell me from which end it will grow. Negative end या positive end? Negative end. Sir, from the किस end से negative. growth होगी? Negative. फिर पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं इसको? जब आपके पापा का पैसा आता है तो हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कहते हैं या पॉजिटिव कहते हैं? आपकी पापा की जेब में, आपकी जेब में पैसा आएगा तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? तो ग्रोथ Sir. कहां हो रही है? एलोंगेशन किस एंड पे होगा इसका? टेल मी. वी नो. टेल मी इफ यू हैव सम आइडिया. सर नेगेटिव पे होगा, जैसे आपने बताया था कि कैविटी होगी और कैविटी है ना नेगेटिव साइड्स पे होगी और कैविटी में ही एटीपी बाइंडिंग साइट होगी. तो मैंने कब कहा कि नेगेटिव एंड पे ग्रोथ होगी? मैंने तो ऐसे बिल्कुल नहीं कहा कि नेगेटिव एंड पे ग्रोथ हो रही है. मैंने तो जब बनाया था तो मैंने तो दोनों एंड्स पे बनाए थे. ऐसे नहीं बनाया था मैंने. सर दोनों सर ends पे कैविटी growth जो होगी वो ना नेगेटिव एंड के साइड खोलेगी. अच्छा चलो छोड़ो. Let's not debate on this. Okay. Now what you have to understand here, that what Indian authors say. Indian authors क्या कहते हैं? Indian authors कहते हैं यहाँ पे, if you look at the Indian authors, what they say, that most of this elongation, most of this growth will take place at the positive end. They say new subunits, new G actins will come at the positive end. They will polymerize at the positive end. So new G actins will come and start polymerizing at the positive end, and at the negative end, disassembly takes place. Negative end, they will leave. More disassembly.
पॉजिटिव एंड पे असेंबली, दैट इज व्हाई टू एंड्स विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मैंने कहा था टू एंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज। तो पॉजिटिव एंड पे देयर इज पॉलीमराइजेशन, नेगेटिव एंड पे देयर इज डीपॉलीमराइजेशन, दिस इज व्हाट दे से, बट दिस इज रॉन्ग, दिस कंसेप्ट इज रॉन्ग। वी नो ये जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं दे आर एबल टू ग्रो by reversible addition of monomers to both the ends. तो ये जो एक्टिन फिलामेंट है, we know it grows by reversible addition, मतलब यहाँ पे आ भी सकता है और डिटैच भी हो सकता है। अगर मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव एंड पे ग्रोथ है तो सिर्फ ग्रोथ ही नहीं है, यहाँ से डिटैचमेंट भी हो सकता है, दे कैन डिटैच ऑल्सो फ्रॉम हियर। तो नेगेटिव एंड पे हमें पता है कि यहाँ से डिटैचमेंट हो रहा है, डिसअसेंबली हो रही है, लेकिन यहाँ पे असेंबली भी हो सकती है, दे कैन असेंबल ऑल्सो। तो assembly and disassembly at the two ends is a reversible process. So that is why we always say कि जो actin filaments हैं, they always grow at both the ends by reversible addition of monomers to both the ends. So growth will take place at both the ends by reversible addition of monomers. इतनी चीज समझ में आगे की नहीं आई पहले। तो दोनों ही एंड्स पे एडिशन भी हो सकता है और दोनों ही एंड पे हटा भी सकते हैं हम, मतलब पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन कैन टेक प्लेस एट बोथ द एंड्स, एडिशन एंड डिलीशन कैन टेक प्लेस एट बोथ द एंड्स। फिर नेगेटिव पॉजिटिव का क्या मतलब? अगर मैं ये कह रहा हूं कि दोनों एंड से आ भी सकता है जा भी सकता है, तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव क्यों कह रहे हैं फिर इनको? टेल मी, फिर क्यों कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है? क्योंकि जो इसका पॉलीमराइजेशन हो रहा है, जो इसका एडिशन हो रहा है, जो इसका लॉस हो रहा है और जो गेन हो रहा है, वो दोनों एंड्स पे हो सकता है। Why we call it negative and positive? Because there's a reason behind this. We know there's a reason behind this, and the reason is कि the rate of polymerization, the rate of assembly and disassembly differs at the two ends. दोनों ही एंड्स पे असेंबली डिसअसेंबली दोनों हो सकती हैं, नो डाउट अबाउट इट, बट their rates will differ. Their rates will differ. We know, हमने क्या देखा है? हमने ये देखा है कि जो नेगेटिव एंड है, देखो मैं एक डायग्राम बना रहा हूं यहाँ पे, लेट मी ड्रॉ डायग्राम हो गई, लेट मी ड्रॉ डायग्राम, ठीक है, फिर देखते हैं इसको। आई एम सेइंग रेट्स विल डिफर। तो क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पॉजिटिव, ये हमारा नेगेटिव एंड है, ये हमारा पॉजिटिव एंड। अब देखो यहाँ पे, इफ आई ड्रॉ एन एरो ओवर हियर, तो अगर हम एरो बनाए यहाँ पे, तो एरो देखो कैसे बनाएंगे यहाँ पे, लुक एट दिस। अब यहाँ पे एडिशन हो रहा है, एडिशन का एरो, एरो जो मोटा है, अब यहाँ से हमारा लॉस भी हो रहा है, लॉस का एरो देखो कैसे है, ये हमारा लॉस का एरो है, ठीक है। तो लॉस का एरो देखो छोटा है हमारा, एडिशन का एरो बड़ा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर हम नेगेटिव एंड पे बात करें, तो नेगेटिव एंड पे जो लॉस वाला एरो है ये ज्यादा बड़ा है, और जो एडिशन वाला एरो है वो छोटा है, देखो। तो दोनों ही एंड्स पे एडिशन भी हो रहा है, दोनों एंड्स पे लॉस भी हो रहा है, लेकिन द रेट्स आर डिफरेंट। जो पॉजिटिव एंड पे है, पॉजिटिव एंड पे वी हैव द रेट ऑफ ग्रोथ इज हायर, द ग्रोथ रेट, द रेट ऑफ एडिशन, the rate of assembly is higher, whereas at the negative end the rate of disassembly is higher, the rate of disassembly is more, this is higher. ऐसा नहीं कि असेंबली नहीं हो सकती, असेंबली हो सकती है, वी नो असेंबली कैन टेक प्लेस ओवर हियर, हम देख रहे हैं यहाँ पे असेंबली हो रही है, यहाँ पे भी डिसअसेंबली हो रही है, लेकिन द रेट्स आर डिफरेंट। पॉजिटिव एंड पे रेट ऑफ असेंबली इज मोर, नेगेटिव एंड पे रेट ऑफ depolymerization or disassembly is more. So this should be very, very clear. That means both growth, both loss can take place at both the ends, but their rates will differ. But their rates will differ. Am I clear with this? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? And in general, what we have seen, in general, we have seen कि the rate of growth
is 5 to 10 times higher at the positive end. तो rate of जो addition है, this is 5 to 10 times higher at the positive end. तो positive end पे जो growth हो रही है 5 से 10 गुना ज्यादा हो रही है negative end के मुकाबले में. Am I clear with this? भाई बात समझ में आई नहीं आई इतनी? Yes, कोई sir. confusion? ठीक है? Now the question is when we proceed further, we know हमने देखा था everything starts with a nucleation reaction. ठीक है? तो अगर हम प्लॉटिंग करें इसकी, क्योंकि हमने देखा कि आर्टिफिशियली ऑल्सो इफ यू हैव अ मीडियम, अगर आपके पास मीडियम है और मीडियम में, ठीक है, ये हमारा मीडियम है, यहाँ पे यू पुट एक्टिन, अगर आप एक्टिन मोनोमर्स जी एक्टिन डाल दो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर को इंक्रीज करो, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर यू पुट एटीपी इन द मीडियम, वी नो पॉलीमराइजेशन विल स्टार्ट. Even artificially also under experimental conditions also we can make this G actin to polymerize into F actin artificially also. Is this very clear? So we know when we plot this in graph कि कितने टाइम पे कितना polymerization हुआ, जैसे एंजाइम के रिएक्शंस होते हैं तो कितने टाइम पे कितना रिएक्शन हुआ. So if we plot this reaction in a graph, so if you plot it, ये देखो, अगर हम इसको ग्राफ में प्लॉट करें यहाँ पे कि कितने टाइम पे कितना पॉलीमराइज, ये हमारा टाइम है, ठीक है, ये हमारा परसेंटेज पॉलीमर है, हाउ मच परसेंटेज पॉलीमर इज प्रेजेंट, हाउ मच, और हम ये भी कह सकते हैं कि हाउ मेनी सब यूनिट्स आर पार्ट ऑफ दिस पॉलीमर. परसेंटेज पॉलीमर मतलब हाउ मेनी सब यूनिट्स हैव एडेड टू फॉर्म अ पॉलीमर. दिस इज व्हाट इज परसेंट पॉलीमर. सो इफ वी प्लॉट द ग्राफ, अगर हम इस ग्राफ को प्लॉट करें, वी गेट दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर. ये देखो, वी गेट व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, लुक एट दिस, वी गेट this kind of structure. We plot it on a graph. That means there are different phases. 3 phases can be seen. ये हमारा लैग फेज है, यहाँ पे क्या लैग है, ये हमारा क्या एलोंगेशन फेज है, ये स्टेडी स्टेट है, स्टेडी है, इतना का है तो इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा. यहाँ पे this has reached a saturation. So this is saturation phase. We call it steady state. स्टडी स्टेट मतलब कि अगर 5 घंटे में इतना था तो 6 घंटे में भी इतना होगा, 7 घंटे में भी इतना ही अमाउंट रहेगा. द अमाउंट ऑफ पॉलीमर विल नॉट इंक्रीज, इट विल रिमेन सेम. ये देखो, इट रिमेन सेम. सो वी कॉल इट स्टडी स्टेट. मतलब स्टडी स्टेट मतलब द सेम अमाउंट विल रिमेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. द सेम अमाउंट ऑफ पॉलीमर इज प्रेजेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. वी कॉल इट स्टडी स्टेट, सैचुरेशन स्टेट. लैग फेज, दिस इज व्हाट इज लैग फेज. लैग फेज में थोड़ा सा टाइम हमारा किल हो रहा है, सम टाइम इज किल्ड इन द लैग फेज. एकदम से ऐसे स्टार्ट नहीं हुआ. देयर इज अ लैग फेज, यू कैन सी देयर इज अ टाइम लॉस. लैग फेज मतलब देयर इज सम काइंड ऑफ लॉस इन टाइम, एंड दिस लॉस इन टाइम, दिस लैग फेज रिप्रेजेंट्स what is the meaning of this? This lag phase represents the time taken by the subunits to interact properly. क्योंकि जब 3 सबयूनिट्स आ रहे हैं, जब न्यूक्लिएशन रिएक्शन हो रहा है, तो लैग फेज में क्या हो रहा है, लैग फेज में न्यूक्लिएशन रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस. 3 subunits are coming together and they have to interact correctly. The subunits come together and they interact correctly. They have to interact correctly, and this will take some time. जब तक एग्जाम नहीं आता तो आपका लैग फेज चलता है, और पता लगा रही अब 2 दिन रह गए एग्जाम के, एकदम से पता लगा एलोंगेशन हो गई. फिर तो भाई साहब, फिर तो 24 घंटे नींद ही नहीं आती फिर तो 2 दिन पहले, और उसके पहले किताब ही नहीं पकड़ी जाती, इतनी नींद आती कि पूछो मत. तो एग्जाम से पहले जो है 1 हफ्ते पहले लैग फेज होता है, और जैसे एग्जाम को 2 दिन रह गए 24 घंटे किताब हाथ में. पता नहीं साल भर ऐसा क्यों नहीं होता है. कितना अच्छा होता अगर साल भर हमारा एलोंगेशन फेज रहे. ऐसा क्यों नहीं होता, एग्जाम से पहले क्यों होता है कि वो जो टेम्परामेंट बनता है पढ़ाई का वो साल भर क्यों नहीं बनता. दैट मींस लैग फेज के साथ होता है. तो यहाँ पे भी the reaction to start will require the subunits to come together, interact properly. It will take some time, it will waste some time, and this is what is reflected in the form of lag phase. And once the nucleation reaction has taken place, एक बार nucleation reaction हो गई, एक बार
हमारा template, nucleation reaction will lead to formation of a template. What is this? This is a template. तो nucleation reaction हुई, we get a template. And once the template is formed, now the elongation starts. एकदम से elongation हो गया. Elongation phase. So this is what is elongation phase. Elongation phase will start. Polymer builds up. Percentage polymer increases now. And during elongation, हमें पता है the rate of addition should be more than rate of loss. तो addition ज्यादा होना चाहिए और loss कम होना चाहिए. तभी elongation होगा. मतलब during elongation क्या हो रहा है? The rate of addition should be higher than rate of loss. Only then the elongation will take place. पैसा कब जोड़ोगे आप? जब बचत ज्यादा हो, खर्चे कम हो, तभी तो पैसा जोड़ेगा पापा का. पता लगा पापा को मर्सिडीज बेंज चाहिए, पापा को बड़ा मकान चाहिए, स्विमिंग पूल होना चाहिए, तो पैसा जोड़ेगा कहां से? जितना कमाए उतना खर्चा हो गया. पापा विल नॉट हैव एनीथिंग. पता लगा हर महीने पापा की किस्तें जा रही हैं. टीवी ले लिया बड़ा वाला, वो एलईडी ये ले लिया, वो ले लिया, मोबाइल फोन ले लिया, तो बचेगा कहां से पैसा? नो ग्रोथ. तो फॉर elongation to take place, that means the rate of addition should be more than the rate of loss, and then the percentage polymer increases. And finally there's a saturation. पापा को पता है इससे ज्यादा पैसा मैं जिंदगी में नहीं कमा सकता. एक महीने में मेरी मैक्सिमम सैलरी 5 लाख हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती. मतलब योर फादर विल रीच अ सैचुरेशन एट सर्टेन एज. इसके ऊपर नहीं कमा सकते वो. सो वी गेट अ सैचुरेशन फेज. इसके ज्यादा फिर परसेंटेज पॉलीमर इंक्रीज नहीं करेगा. वी गेट अ स्टेडी स्टेट. And during steady state, we know the same amount of polymer length is maintained over time. इतना है तो इतना ही रहेगा. मैं क्या कह रहा हूं कि same amount of polymer length is maintained over time. So do you think कि saturation state में, steady state में, is it a static structure? तो अगर हम steady state की बात करें, steady state में क्या it is a static structure? क्योंकि I am saying same amount of polymer length is maintained. अगर 1 मीटर था तो 1 ही मीटर रहेगा, आज भी, कल भी, परसों भी. Today, tomorrow, and day after, the same polymer length is maintained, 1 meter, approximately 3 feet. So do you think this is a static structure during steady state? बताओ मुझे. सर रेट ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन इक्वल हो जाएगा. मतलब रेट ऑफ लॉस वुड बी इक्वल टू, ऐसा नहीं कि इट इज अ स्टैटिक स्ट्रक्चर. नो. अगर आपके जेब में डेली 100 रुपए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खर्चा नहीं कर रहे. एवरी टाइम योर फादर गिव्स यू 100 रुपीज एवरी डे, यू स्पेंड इट. आपके पापा ने 100 रुपए दिए, आपने खर्च कर दिए, फिर से 100 रुपए आ गए, फिर पापा ने अगले दिन 100 रुपए दे दिए. तो जब भी मैं आई आस्क यू कि आपकी जेब में कितने पैसे हैं, आप कहोगे सर मेरी जेब में 100 रुपए. कल भी मैंने ये पूछा था, आपने यही जवाब दिया. आज भी मैं पूछ रहा हूँ कितने पैसे, आप कह रहे हो 100 रुपए. फिर मैं परसों ये पूछूंगा, आप कहोगे सर 100 रुपए मेरी जेब में. तो क्या आप खर्चा नहीं कर रहे? आप खर्चा कर रहे हो. लेकिन every time you spend 100 rupees, your father gives you 100 rupees. So that means during steady state, a constant amount of polymer length is maintained. It does not mean that the structure is static. It means that the rate of loss is equal to rate of gain. मतलब ये जो rate of addition है, this is equal to rate of loss. तो 5 अगर सब यूनिट्स नेगेटिव एंड से जा रही है तो पॉजिटिव एंड पे 5 सब यूनिट्स ऐड हो जाती हैं. तो स्टेडी स्टेट में भी डायनेमिक structure is maintained, dynamism is maintained, but the rate of addition would be equal to rate of loss. लेकिन elongation में क्या हो रहा था? Elongation में rate of addition should be more than rate of loss. Am I clear? This should be more than rate of loss. ठीक है? So this you have to keep in mind. So we have seen so many things over here. What is happening? What is not happening? ठीक है? Now there's a problem. I have a problem. Let us talk about this problem. The problem is, I told you कि ये जो globular structure है G actin का, this globular structure has a central cavity and the central cavity binds ATP.
अब तक हमने इसकी बात ही नहीं करी यार, हमने तो एटीपी की बात नहीं करी। ऐसा हो सकता है कि हम एटीपी की बात ना करें? एनर्जी नहीं चाहिए क्या? क्योंकि जब पॉलीमराइजेशन होगी, when the G actins will polymerize, they will polymerize at both the ends, but the rates will differ, we know. When the polymerization takes place, what happens to ATP? इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी तक। What happens to the ATP now? क्योंकि एटीपी का तो कोई रोल तो होगा पॉलीमराइजेशन में, कि अपने आप ही हो जाती है पॉलीमराइजेशन? टेल मी। एनर्जी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? टेल मी। तो एटीपी हैज टू break down or not? It has to hydrolyze into ADP. The gamma phosphate bond भाई ATP में 3 phosphate है, अल्फा बीटा गामा 3 phosphates होते हैं, ठीक है? तो जो गामा phosphate है, it has to be removed, it has to be hydrolyzed during the polymerization. Yes or no? बताओ। The answer is no. Answer is no. तभी तो मैं कह रहा हूँ there's a problem. और यहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, जहां कंफ्यूजन है वहीं से क्वेश्चन है। Examiner is very smart. He's more smart. I am more smart than you. आपको लगता है? ऐसा नहीं लगता है? So let me tell you now. Let me catch your neck. अब आपकी गर्दन पकड़ता हूं मैं। चलो, the question is what is the use of this ATP? ठीक है, we know ये जो ATP है, जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, दे बाइंड टू एटीपी। और जो हम अगर माइक्रोट्यूब्यूल्स की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट माइक्रोट्यूब्यूल्स, जो हमारे स्पिंडल फाइबर्स बना रहे हैं, दे आर आल्सो पार्ट ऑफ साइटोस्केलेटन। एंड वी नो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ ट्यूबलिन्स। यहाँ पे एक्टिन बना हुआ है, यहाँ पे ट्यूबलिन्स होते हैं। वी हैव ट्यूबलिन्स इन द फॉर्म ऑफ डाइमर्स, अल्फा ट्यूबलिन, बीटा ट्यूबलिन, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डाइमर्स। तो ट्यूबलिन प्रोटीन्स हैं जो माइक्रोट्यूब्यूल बनाते हैं, और जो एक्टिन प्रोटीन है वो माइक्रोफिलामेंट बनाते हैं। तो एक्टिन्स बाइंड टू एटीपी, लेकिन जो ट्यूबलिन्स हैं दे बाइंड टू जीटीपी। आपने याद रखना है, दे बाइंड टू जीटीपी। अदरवाइज सेम प्रोसेस इज सेम, बट वन इज बाइंडिंग टू जीटीपी, वन इज बाइंडिंग टू एटीपी। इज दिस क्लियर? तो एक्टिन बाइंड्स एंड हाइड्रोलाइजेस एटीपी, ट्यूबलिन बाइंड्स एंड हाइड्रोलाइजेस जीटीपी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव सीन, कि अब मैं बार बार एटीपी बोलूं, मैं बार बार जीटीपी बोलूं, दिस विल क्रिएट अ कंफ्यूजन। तो वी नो जीटीपी and ATP, they can both be called as NTP. We can call them as NTP, nucleotide triphosphate. एडिनोसिन है वो भी न्यूक्लियोटाइड है, गोनोसिन है वो भी न्यूक्लियोटाइड है। तो बोथ ऑफ देम आई कैन सिंपली कॉल देम एज, या सीटीपी, कुछ भी बोल दो, प्लांट्स में सीटीपी भी होता है। तो वी हैव एनटीपी, वी कैन कॉल देम एज एनटीपी, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। तो मैं एटीपी की जगह क्या बोलूंगा? आई विल कॉल एनटीपी। जीटीपी की जगह मैं क्या बोलूंगा? एनटीपी। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट वी हैव सीन, कि if we have these G actins with non-hydrolyzable NTP, तो अगर इस G actin में हम ये जो ATP अटैच कर रहे हैं, दिस इज नॉन हाइड्रोलाइजेबल फॉर्म, मतलब इट कैन नॉट ब्रेक डाउन इनटू ADP। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? किसी को समझ में ना आ रही हो पूछ लो। एनीबडी हैज एनी डाउट? कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वो इज मोर इंपॉर्टेंट। सर पहले आप कह रहे थे कि एटीपी एडीपी पे कन्वर्ट होगा, हाइड्रोलाइज होगा, अब आप कह रहे हैं वो नहीं होगा। अब मैं कह रहा हूं कि मैंने एक स्पेशल एटीपी लगा दिया ना, आई गिव यू जी एक्टिन विद अ स्पेशल एटीपी व्हिच कैन नॉट हाइड्रोलाइज। दिस इज नॉट अ नॉर्मल एटीपी, ओके? दिस इज अ नॉन हाइड्रोलाइजेबल फॉर्म ऑफ एटीपी which is attached to the G actin. So if we attach a non-hydrolyzable form of ATP to the G actin, do you think the polymerization will take place? Do you think they will form F actin? Yes, they will form F actin. तो मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं if ये जो हमारा G actin है, this G actin has a non-hydrolyzable, this has a non-hydrolyzable form of ATP or form of NTP.
Do you think it can polymerize? Can it form actin? The answer is yes. Answer is yes. They again start polymerizing. यहाँ पे ATP है. That means ATP is not hydrolyzed, but still polymerization takes place. This shows what? This shows that no energy is needed from ATP. Energy is not required. This shows what? This shows that for polymerization reaction, no energy is needed. No energy is needed. क्योंकि ATP does not hydrolyze. We have a non-hydrolyzable form. ये तो ATP cannot be converted to ADP. ये reaction हो ही नहीं रही यहाँ पे. But still polymerization is taking place. That means this shows no energy is needed. Am I clear or not? Now the question arises, if ATP is not hydrolyzed to ADP, then what is the use of this ATP? What is the use of ATP then? जब इसकी जरूरत ही नहीं है हमें वहां पे, when it is not being hydrolyzed and polymerization is still taking place, then what is the use of ATP? फिर क्यों अटैच कर रहे हैं ATP को? कैविटी में जाके I'm saying there's a ATP binding site, उसका तो हाइड्रोलिसिस ही नहीं होता है. And what if I have a, तो जब इसका यूज ही नहीं है, तो we have a actin, this is a G actin with no ATP. अगर मैं कहूं no ATP, तो क्या अपॉलीमराइजेशन होगा? क्योंकि इसका यूज ही नहीं था. There was no use of this, so I remove it. मैंने रिमूव ही कर दिया. नो ATP, चलो भाई अटैच ही नहीं करते हैं ATP, खत्म हो गया. Now will the polymerization take place? Tell me. Will the polymerization reaction take place? Tell me. What we see, no. मतलब there's a lot of confusion. घर में भाई की जरूरत नहीं है, लेकिन जब भाई नहीं होता है तो घर में काम भी नहीं होते कुछ पापा के, और वो दिन में करता भी कुछ नहीं है, बैठा रहता है खाली भाई घर पे. लेकिन अगर if your brother is not there, पापा will, the house does not function. मम्मी का मन नहीं लगता, पापा का मन नहीं लगता, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है. अगर वो नहीं भी रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद, तो दिस इज क्रिएटिंग सच अ सिचुएशन ओवर हियर दैट आई एम सेइंग कि ATP does not hydrolyze, energy is not needed, but still polymerization takes place. But if I remove ATP, then no polymerization takes place. The question again arises, what is the use of ATP? क्योंकि अगर नहीं है ये, तो polymerization reaction नहीं हो रहा है, और जब ये होता है तो polymerization takes place, but energy is not given. It does not liberate energy. And what we have seen under normal condition, what happens once the polymerization has taken place, after the polymerization has finished, by polymerization has finished now. Once the polymerization has finished, ये ATP है हमारा, यहाँ पे भी ATP है, 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 ये हमारा नेगेटिव एंड है, ये पॉजिटिव एंड है. Polymerization has taken place. So I am saying, after the polymerization has taken place, now the hydrolysis starts. Now the hydrolysis starts towards the negative end. Now the hydrolysis starts towards the negative end. मतलब now this ATP is converted to ADP towards the negative end. Positive end पे क्योंकि नए नए सब यूनिट्स आ रहे हैं, तो they'll have ATP. तो after the polymerization has taken place, there's some time lag, and then the hydrolysis starts. तो भैया जब पॉलीमराइजेशन हो गया उसके बाद हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तो फिर जरूरत ही क्या है अब इसकी? पॉलीमराइजेशन तो पहले ही हो गया. Then what is the use of this energy now? What is the use of this energy? जब पापा का ऑपरेशन हो गया और पापा घर आ गए,
फिर चाचा जी कह रहे हैं भाई पैसा ले लो ऑपरेशन के लिए, जब मांगा तब तो दिया नहीं। अब जब पिताजी का ऑपरेशन हो गया, पिताजी घर आ गए और अच्छे खासे चंगे हो गए, फिर चाचा जी कहते हैं लो लो भाई पैसा ले लो। अब आप क्या करोगे पैसे लेके, जब ऑपरेशन ही हो गया पापा का। सेम सिचुएशन इज हियर। After the polymerization has taken place and now the hydrolysis is taken, what is the use of this? काम तो पहले ही हो गया। Tell me the answer now. What is the use of ATP? What is very clear? Something which is very clear is कि ATP does not provide energy. What is very clear is कि ATP does not provide energy for the polymerization process. ये clear है कि ATP की energy नहीं चाहिए polymerization के लिए. And ATP is hydrolyzed after the polymerization. This is also clear. कि ATP hydrolysis takes place after the assembly has taken place. You will ask me, sir, फिर काम ही क्या ATP का? Now what we know, very important, the use of ATP is to increase. क्या है? It is to increase the polymer dynamics. The use of ATP is to increase the polymer dynamics, not to provide energy for assembly. It does not provide energy for assembly, but it is to use to increase the polymer dynamics. Am I clear? So use of ATP is to increase dynamics. And we know ये जो actin filaments हैं और ये हमारे जो microtubules हैं, they show two different kinds of dynamic behavior. Both of them, they show two different kinds, two different types of dynamic behavior. They show two different kinds of dynamic behavior. Very, very important. यहां से क्वेश्चन आएगा, आता है क्वेश्चन यहां से, जो आप नहीं करोगे एग्जाम में, मुझे पता है. They show two different kinds of dynamic behavior. The first is called as treadmilling. And the second is called as dynamic instability. The second is called as dynamic instability. So two different kinds of dynamic behavior. ठीक है, आपको याद रखना है जो एक्टिन फिलामेंट है, ये जो treadmilling है, look at the treadmilling. Treadmilling is seen in both actin filament में भी और microtubule में भी, they both show treadmilling. लेकिन जो dynamic instability है, it is only found in microtubules. Dynamic instability is only found in microtubules, not in actin filaments. तो याद रखो, ये क्वेश्चन है यहां से, ये पक्का. एक्टिन फिलामेंट्स कौन सा बिहेवियर शो करेंगे? treadmilling. लेकिन जो microtubules, they'll show both treadmilling as well as dynamic instability. Have you understood this till now? What is the use of energy now? Not for the polymerization, not for the assembly, but to increase the dynamics.